Namaskar, Jai Hind, ladies and gentlemen. Now, time to read your stories. This is the picture which you can see, which was posted yesterday. And before we start reading the story, let's see what is shown here. There is a man who is standing outside some building in office. उस बिल्डिंग पे लिखा है बड़ा बड़ा नो वैकेंसी. अब एक बड़ा है. आई होप यू अंडरस्टैंड द थीम. अगर आप रोज रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो आपको थीम तो समझ में आ गया होगा. And I'll pick up few stories here. Ram, who was a 4-year BTech student of Ramgarh University in Kanpur, during his summer holidays, decided to apply for internship in many companies, but there were no vacancies in any company, so decided to apply for the online internship. He worked very hard in his summer vacation, enhanced his basic advanced commander computer. Basically, उसने सब किया, and then it is more about he got placement in his favorite company, Google. His dream came true. What you learn about it? एक बच्चे को internship में नहीं मिला है, and then उसने finally कुछ course किए, and he finally got placed. Story is okay. The issue is finally what you thinking about a bigger project and bigger perspective. आप सिर्फ अपने ही एक लाइन में मतलब you are involved into this की vacancies नहीं है और आप अपने लिए कुछ मेहनत करते हो, तो still stage 1 में I'll go ahead with the story, but depend on narration. But however it still lacks. It's kind of a doubtful. I may go ahead with a doubtful and not a complete yes, क्योंकि आपका टेक अवे क्या है कि आपने अपना एक प्लेसमेंट फाइनली सिक्योर कर लिया. व्हाट अबाउट द अदर पीपल एंड ऑल, और टू सॉल्व द बिगर इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और मे बी नो वैकेंसी समथिंग, बिकॉज आपके पास अगर इतना नॉलेज है, बट यू कैन क्रिएट फॉर समबडी एल्स. नाउ अनदर स्टोरी, श्रुति सिंह, विच शी राइट्स, माधव वाज ए. अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें आपने बॉय देखा है मेकिंग, लेट्स टेक इट अप नॉर्मल. बट माधव वाज ए बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम JNU. BTech graduate from Jawaharlal Nehru University. He was looking for a job in good company. Initially, there was no vacancy, so he started teaching by his online videos in free and helped many students. This also helped him to get more and more knowledge. अब देखो ये स्टोरी सही चल रही है, लेकिन बहुत ही जनरलाइजिंग है ये स्टोरी. उसको किस फील्ड में वो बीटेक है ग्रेजुएट, उसको किस फील्ड में जॉब चाहिए, वो किस तरह की वो वीडियो बनाना चाहता है, आपने बस लिखा वहां नहीं मिला तो ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, and then he go ahead. Eventually got an opportunity to give interview in Apple company. He manages interview preparation and continue his videos as well. His interview was quite good and all, and finally basically online पढ़ाया और बाद में जॉब मिल गया and all. कुछ relevance नहीं आया. So I will say no to this story, and I hope you understand. आपको इस पे improvement करने की क्या जरूरत है. Now again, we'll pick up one more story from अर्जुन, बिकॉज नाम लिखा हुआ है. वैसे मैं पढ़ने वाला था ये वाला, बट आई कुड नॉट रीड दिस. बड़े ये हाईफाई नाम जो होते हैं थोड़ा उनको पढ़ने में गड़बड़ हो जाता है. लाइक यूजर इज 7KS एंड ऑल, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से ऑल दिस नेम, बट ठीक है. दिस इज द स्टोरी ऑफ राहुल 22. आपको ऐसे नहीं स्टार्ट करना है. दिस इज द स्टोरी. आप सीधा स्टार्ट करो. व्हाई यू रिटन ऑल दिस 1 2 3 4 5 6 वर्ड आपने वेस्ट कर दिए. राहुल 22 year old positive mood. He's completed his BTech in CS Computer Science last year and has aimed which college, which place, and has aimed to work in HCL Tech. When he reached at the office, he saw a notice board which was boarded as no vacancy. He felt upset for a while and asked to HR about the opening of next vacancy. Returned home and keeping practicing skills at local IT company. After 6 months, up same, it was open. Rahul attempted and performed well, written an interview and got his dream job at HCL Tech. अपना ही प्रॉब्लम से आप निकल रहे हो और फाइनली यू जस्ट रीच शेयर की. अब नहीं तो अगली वाली वैकेंसीज में आपको मिल जाएगा. Raman Yadav. In this story, there is a male character whose name is Bhanu. He is 24 year old. By the way, this is how you narrate. You write directly like this. Bhanu, a 24 year old सॉफ्टवेयर इंजीनियर. इंजीनियर का स्पेलिंग पूरा गलत है. कहाँ से है, क्या है, वो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनकम्प्लीट है, बट स्टिल यू कैन गो अहेड विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. एंड देन देयर आफ्टर ही वेंट टू कंपनीज टू गिव इंटरव्यू, बट ड्यू टू नो वैकेंसी गेट नो चांस, बट ही डिड नॉट लूज होप. ही गिव ऑल एफर्ट. हर जगह बच्चा अपने ही उसमें चल रहा है. लेट मी सी इफ समवन हैज मेक ए स्टोरी वेयर यू ट्राई टू रिजॉल्व दिस इश्यूज. ओके, चलो यहाँ पे एक है जो चलो यूजर वाले के पढ़ते हैं. यूजर इज 7KS 9KD6P. Gyan 23 was living in village Kashi. He could not make
that much money over there. So he took money, whatever he earned from his work, and went to city Gurgaon. He was well prepared for his interview, but whenever he went to any office, he returned jobless. He then joined XM Cafe and were considered friends with whom he worked days and nights. After a few months, started doing his own marketing business. Parents were very happy with him. I don't see still, I mean, I'm still looking for a story which I can say, yes, इसको पढ़ने के बाद मेरा मन खुश हो गया टाइप से. I think कुछ ज़्यादा ही हो गया. Let's go further with this. Okay, Sarah is 28, successful CEO of a renowned IT company based in Noida. She, being a hardworking person, made her company grow so much that she has now decided to open a new branch in Gurgaon. Start taking personal interviews for various posts in the company. She selected talented employee for the new branch, and within a span of 3 days, all the vacancies were filled with deserving candidates. Sarah is now a proud CEO of 2 branches, and she is managing both the branches very systematically and made a spot in the list of top CEOs of the country. थोड़े actions missing है इसमें, but yes, से यूज द करेक्ट परसेप्शन, बिकॉज आप उसने उसको अलग तरह से दिखाया. वो जो नो वैकेंसीज है कि शी वाज एबल टू कंप्लीट ऑल द वैकेंसीज इनटू दिस इन other problems keep coming and all. Here you can create something. Okay, I'll take you to some other place. This is how you write your story. When you write a story, just think about it. You talk about introduction in one line. When we talk about introduction, you can add on all these things like your name of the character, age, then profession, student है, किस चीज का स्टूडेंट है, कहाँ से है, या फिर डॉक्टर है, CEO, जो भी आप लिखते हो, एंड प्लेस. जब आप ये प्लेस तक लिखते हो ना, तब एक इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट होता है, क्योंकि मुझे ये आइडिया लगाता है कि विच प्लेस इज फ्रॉम. नाउ व्हाट काइंड ऑफ ए बैकग्राउंड यू आर टेकिंग इट टू स्टार्ट योर स्टोरी. एम ऑब्जेक्टिव बोल दो, एम बोल दो, या प्रॉब्लम स्टेटमेंट, या आप एक या 2 लाइन में लिख सकते हो. इट इज अगेन, इट इज नॉट ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट. का मतलब ये मत समझना, काफी बच्चों को लगता है कि नेगेटिव वर्ड है या नेगेटिव है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम. लाइक हियर द इशू इज द नो वैकेंसी. देयर आर नो वैकेंसी व्हेन ही गोइंग टू अप्लाई फॉर द जॉब or maybe for other people and all. So you can bring out this issue here. That's what is required here. What action you take to resolve those problems. जैसे कई बच्चों ने अपने उस पे बनाया कि उनका इशू था, स्टोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. Sometime you may go ahead if you narrate well, sometime you may not, but issue is कि बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वैकेंसी किसी के लिए भी नहीं है, and how do you resolve it? That's what I'm looking here for. And achievement last में again 1 or 2 लाइन्स में. तो ओवरऑल आप अगर आप देखोगे तो आपका पूरा स्टोरी 10 to 12 लाइन्स में कंप्लीट होता है, और मे बी 8, अगर 8 लाइन्स में भी लिखा है स्टिल एक्सेप्टेबल. अचीवमेंट वट एवर ऑब्जेक्टिव, मतलब आप फाइनली यू हैव टू थिंक एंड टू एंड थिंकिंग. व्हेन वी से एंड टू एंड थिंकिंग, व्हाट वाज योर ऑब्जेक्टिव या व्हाट एवर योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एंड फाइनली हाउ इट इज रिजॉल्व्ड. सो वो बिल्कुल कंप्लीटली अगर आप करोगे, दैट इज व्हाट विच इज बीइंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए स्टोरी. एंड इन दिस काइंड ऑफ ए स्टोरी, ट्राई टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स. High package, you talk about he finally got a very high package, big package and all, and or maybe you talk about looking for a 1 CR package. ये सब बातें नहीं बोलनी है. Do not make a story which is money minded. Your problem should not be like you wanted to make money or create money. You wanted to create job. That is the main thing. So, and do not make a story on stock market or something on very high profit, low profit and all. Make in terms of a story which is actually dealing with the actual root cause of any of the issue जो भी आपका उस पिक्चर में दिखाया गया. I hope you understand this thing, and so with this I hope I would like to see some good story. Maybe you can write some story in the comment box of this video itself, and we'll try to see if you change it. And moreover, after this video, you go through the video and understand, try to make one more story maybe with a different theme. So आज के story में take away are, first of all, you have to see a bigger picture. I mean, what is the thing which you're at a bigger level you can do it. Then thereafter, your story should avoid all this thing money-minded approach. It should actually working on the root cause analysis जो आप problem statement दिखाते हो, and उस resolve that root cause जो भी उसमें दिखाया गया. And that's what is being expected. And not like your own problem and you try to resolve on problem and finally you just get over all this your problems and all.
I mean, your own issues of very small issue. You should not get stuck to this. मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, मैं करके अपना जॉब ले लिया मैंने, बस फिर खत्म. तो आपको एक बिगर विजन कहीं ना कहीं मिसिंग है. तो आई थिंक इफ यू एड दिस, द स्टोरी बिकम मोर ब्यूटीफुल. आई होप you get the concept, and you'll again write one more story and a different theme, or maybe at least you add on to the required action. Till then see you tomorrow. Jai Hind, Jai Bharat. Like to see your stories.